Hello and welcome back everyone. My name is Manika Kadian and I am a counseling psychologist. So आज मैं आप सबसे बात करूंगी why individuals feel drained after socializing. होता है ना कभी कभार हम कोई social event से आते हैं या फिर हम कोई पार्टी अटेंड करके आते हैं. We end up feeling really overwhelmed by it. हमें लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं. Feeling drained doesn't mean that you are antisocial. There might be certain possible reasons for the same. So let's now understand those reasons. Number one is people pleasing. People pleasing is basically when an individual hold themselves accountable कि उन्हें सबको comfortable feel कराना है. They end up also saying yes to the plan when the person is not interested, or just simply nodding क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनसे नाराज ना हो जाए. This whole process in itself is overwhelming, but it also gives an impression that the person ignore their own needs just to fit in. पीपल प्लीजिंग इज बेसिकली हम दूसरों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और अपनी फीलिंग्स और अपनी नीड्स को वी पुट अंडर द कारपेट. नंबर टू इज लैक ऑफ ऑथेंटिक कनेक्शन. कभी कभार होता है ना कि समटाइम्स वी हैव अ वेरी स्मॉल कॉन्वर्सेशंस. वेदर कैसा है, वर्क कैसा चल रहा है, लाइफ इन जनरल कैसी चल रही है. लाइक आई मीन देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दीज शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस, बट एट द सेम टाइम दीज कॉन्वर्सेशंस डजंट फीड अस इमोशनली. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन यू हैव सम लॉन्ग हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब 1-2 घंटे उनके साथ बैठ के बीत गए. So sometimes it is not about that the socialization in itself is draining, but the absence of real and meaningful connections is something that makes us drained. Now the third point is emotional masking. There might be certain days कि जब हम बहुत ज़्यादा maybe sad हैं या stress हैं, and let's imagine कि हमारी कोई social meetup planned है, and we end up going there with carrying a mask with our own self so that हमसे कोई बहुत ज़्यादा सवाल ना पूछे. So pretending to be okay when you are not okay in itself is something a very difficult task to carry with. At the same time, outside we might look all cheerful, but inside there might be thousands of questions that might be running towards those situations, those events, with the effort of hiding how you truly feel. So this all pointers are indicating कि कई बारी हम अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को इस तरीके से सप्रेस कर लेते हैं एंड वी जस्ट एंड अप taking it on and on. At the same time, whenever next time you feel drained after socializing, I would like you to please do ask yourself, was I truly myself in that space, or did I truly feel connected with them, or I was just surrounded? Please remember, when you focus what truly nourishes you, you will also realize that protecting your energy isn't selfish, it is an act of self-respect. Please take care everyone. Thank you.